स्टूडेंट टीचर्स, फॉर्मूला अभी भी वही है, लेकिन एक्सेलरेशन को मैं क्या करूंगा, मैं ग्रेविटी को ले लूंगा, बिकॉज ग्रेविटी कांस्टेंट है। तो मैं एक ही जगह मैं यहां पे बोलता हूं मैंने जी ले लिया। ग्रेविटी का वैल्यू हमको मालूम है, ऑलमोस्ट सेम है, बहुत थोड़ा सा वेरी करता है इधर उधर, हम जी को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। और आसान करने के लिए जी का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको 10 मान लेते हैं, राइट। तो मैंने उसको अप्रोक्सीमेटली 10 किया, क्यों 10 से डिवाइड करना आसान है, मल्टीप्लाई करना आसान है। तो मेरे को मास पता करना है कि अगर किसी पे जी एक्ट करे, ग्रेविटी एक्ट करे और 1 न्यूटन का फोर्स चाहिए मेरे को, तो मेरा मास कितना होना चाहिए 1/10 kg। 1/10 kg कितना होता है 100 ग्राम। तो अप्रोक्सीमेटली 1 न्यूटन उतना फोर्स होता है जितना 100 ग्राम 100 ग्राम्स को अपने हाथ में होल्ड करो आप, आपको जो महसूस होगा वो 100 ग्राम होता है। अगर आप अपने स्केल में इस स्केल को ऐसे दबाओ कि ये मैडम की जगह एक 1.8 kg नहीं आए, सर की तरह 1.2 kg नहीं आए, उसका 2.5 किलो का हाथ नहीं आए, व्हाट इट शुड कम इज ओनली 100 ग्राम। 100 ग्राम 100 ग्राम जितना जो फोर्स है, हल्का से आपको टच करना पड़ेगा 100 पे लाने के लिए। अब जो आप करो दबाओ इसको ताकि 100 तक आए, है ना, दिस इज 1 न्यूटन, राइट। तो इट इज नॉट अ बिग फोर्स। 1 न्यूटन का, हाँ लगाइए सर, मेहदी सर, 1 न्यूटन 1 न्यूटन, हाँ 100 ग्राम 100 ग्राम पे कितना 2.5 किलो नहीं, 2.5 किलो वाले 2.5 किलो का नहीं, 2.5 किलो वाले 100 ग्राम। तो जब आप वापस जा रहे होंगे उस समय मैं इसको यही रखूंगा, जाते जाते सब लोग एक बार इसको दबाकर 1 न्यूटन को फील करना। तो 1 न्यूटन जो है, 1 न्यूटन का एक सा प्यार होता है, 1 न्यूटन का प्यार होता है, 1 न्यूटन का मार 1 न्यूटन इज जेंटल टच, इट्स अ जेंटल टच, इट्स नॉट अ बिग फोर्स। सो व्हेन वी से कुछ कोई वेट है, लेट अस से ये आओ पता करते हैं, मैं इसको 2 मैग्नेट है मेरे पास, मैं इसको यहां पे रखता हूं, तो मेरे को बताओ कितना ग्राम आ रहा है ये 200 ग्राम। तो कितना न्यूटन हुआ 2 न्यूटन। सो ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन विद अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, राइट। इट इज 200 grams, 100 gram you have all learnt is 1 newton. 2 magnets 2 newton. If I take one magnet out, I keep only one magnet, then it is 1 newton. So my magnet is exerts a force of 1 newton. So if you hold a magnet in your hand, that is the feel of 1 newton, right? तो अगर मैं दोनों रख दूं इसको, तो this becomes 2 newton, right? क्यों? Because both the masses are putting a force, gravity is pulling them down. So 1 newton plus 1 newton is 2 newton on the scale. ये पड़ता है इसको as 200 grams. Now I want you to think, मैं इसको ऐसे रखता हूं, अब मैं क्या करूंगा, मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, it has a north pole and it has a south pole. Now at this point they are in attractive state. That means if one magnet is a north, then the other magnet is a south. If I put it like this, then north above the north, right? North above the north. तो अब मैं इसको रखता हूं यहां पर, I keep it here. You have to tell me इस समय रीडिंग क्या आ रहा होगा यहाँ पर, दिखा नहीं रहा हूं मैं आपको, 0. तो let us have a voting. I guess 0. Learn my votes. कितना है? तो यहाँ पर let me draw the diagram for you. This is one magnet and there is another magnet. Whatever answer you give, you should also give a reason why you are thinking 0. like this. 0.
So there can be. So there are options. You are saying first 0. First answer is 0 or 0 grams. Okay. Okay. Grams 0 Newton. ऐसा क्यों सोचते हैं आप? Justify करो. क्यों सोचते हैं ऐसा? तो पहले और कितने लोग बोलते हैं 0? वोटिंग करते हैं 1 2 3 4. तो 4 people say 4 लोग बोलते हैं कि 0 आंसर होना चाहिए. दूसरा आंसर 100 grams. 100 grams. Raise your hand. 100 grams. क्योंकि ये पीछे तो एक मैग्नेट बैठा है, तो हवा में लटक रहा है. या 100 grams वाले हाथ खड़ा करें. Okay. So we have 1 2 3 4. रेस पूरा काउंटिंग करना है मेरे को. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 people. Third option 200 grams. 200 grams. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 200. Less than 100. Okay. None is that answer. Less than 100. Okay. 100 से कम आ रहा होगा. Why? क्यों? कितने लोग बोलते हैं 100 से कम? 1. और कोई इनके साथ देना चाहता है तो yes. 2. All right. And fifth option none. इनमें से नहीं है, कोई और होगा आंसर. के लिए कौन जाना चाहते हैं? बाकी सब लोग. बाकी सब लोग. So another 25 people. So elections have happened. Congratulations. सरकार बनने जा रही है नन की. Yeah, government of none. There, what's the maximum votes? 25. None. Right. Okay. Let us see. Because answers are not important. Why that answer is coming? It's important. Why you are thinking like that, and what is wrong or what is right in your thinking? Some answers are right, so there must be something right that you are thinking. So let's find out that. So 15 people have said 100 grams. तो किन ने कहा था 100 grams और क्यों कहा है? Justify करो. नीचे है. दूसरा वाला अगेंस्ट द ग्रेविटी है सर, उसको पुल कर रहे हैं ऊपर की तरफ धक्का रहा है, तो उसका वजन तो नहीं है, वो तो हवा में लटका है, उसका वजन नहीं आएगा. राइट. और यही सबका यही लॉजिक है क्या? 100 वालों का यही लॉजिक है. ऑलराइट, वेरी गुड, सही बात है. लिखते हैं. ओके. 200 ग्राम. 12 लोग ने बोला 200 ग्राम. या सिस्टम का मास कांस्टेंट रहेगा. अच्छा, एक बात सोचो, एक पिंजरा है. मान लो हम ये पिंजरा है, हम सब चिड़िया है. ठीक है. इमेजिन करो सब चिड़िया है, हम बैठे हैं पिंजरे और हमारा पिंजरा बैठा है एक ऐसा बड़े से स्केल. हमारा सबका वजन आ रहा है. ठीक है. सबका वजन XXX, तो ऐसा 60X आ रहा है. एक चिड़िया उड़ गई. एक चिड़िया उड़ गई. अब वजन 60 रहेगा कि कम हो जाएगा? तो ये मैग्नेट में तो चिड़िया है, चिड़िया उड़. वो तो हवा में लटका है. हाँ, तो भी तो चिड़िया है ना. चिड़िया मान लो ये चिड़िया उड़ है, ये चिड़िया उड़ है ना. किसकी वजह से? ये नीचे वाला ऊपर वाला मैग्नेट इसकी फोर्स डालेगा कि नहीं? डालेगा तो ऊपर है, डालेगा. वेरी गुड. और चलिए क्लासिफिकेशन आपका लेते हैं. ये लोगों ने बोला 100 से कम आएगा. 100 से कम आएगा. 100 से लेस क्यों आएगा? कुछ सेम मतलब 200. तो आओ देखते हैं इसको क्या बोल रहा है. तो सब लोग एक साथ बोलेंगे खुलता. 5 4 3 2 200. So clap for those who said 200. But I tell you what, in science
those people learn the most who make a mistake. Because गलती हो गया, क्यों हुआ गलती? Why did we make a mistake? वो लॉजिक जब क्लियर हो जाएगा, लाइफ विल बिकम वेरी ब्यूटीफुल. तो ये जो है न्यूटन का पूरा लॉज लगेगा, राइट? अब हम देखें कि नीचे वजन यहां से जाएगा ना नीचे, राइट? इसके ऊपर इस ब्लॉक का वजन ये तो खुद से 100 ग्राम्स है, राइट? अब मैं अगर क्या करूं, और इसको डायग्राम में देखते हैं, इसका अपना वजन 100 ग्राम है. ये एक और फोर्स लग रहा है इस पे, मैग्नेटिक फोर्स. किसने लगाया? इसको 1 बोलते हैं, इसको 2. फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 ऊपर. और मैग्नेटिक फोर्सेस को दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं. इसने यहां पे आके लटक गया. अगर हम 2 की बात करें, 2 के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1. 2 की बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी तो लग रहा है इसके ऊपर. धरती माता इसको, ग्रेविटी इज पुलिंग इट डाउन. और ये लटका क्यों हुआ है? इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है कि ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स है, नीचे की तरफ ग्रेविटी. इसका तो हल हो गया, ये तो बैलेंस्ड है. नेट फोर्स इसके ऊपर कितना है? 0 है ना. हैंड रेसलिंग करेंगे अगर हम किसी के साथ, और कोई भी जीतेगा नहीं. करो हैंड रेसलिंग, राइट? हाँ, जोर लगा के. सो अब कोई जीत नहीं रहा ना, इसका मतलब माई फोर्स इन दिस डायरेक्शन इज इक्वल टू हिज फोर्स इन दिस डायरेक्शन. इक्विलिब्रियम. अगर मैं बोलूं कि मैंने लगाया 50 न्यूटन, तो इसने कितना लगाया? 50. Because it is in equilibrium. Therefore, we can say that इसका वेट तो 100 ग्राम्स था, इसके ऊपर फोर्स ऑफ न्यूटन, जो ग्रेविटी का जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो भी 100 ग्राम के बराबर. तभी 100 ग्राम्स बैलेंस ईच अदर, राइट? न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है every reaction, if this magnet has pushed the upper magnet upwards, then the second magnet will also push the lower magnet. So if I talk about the first magnet, उसका अपना वेट है 100 ग्राम, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसका अपना. उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? मैग्नेटिक फोर्स, which is also equal to 100 grams. दोनों का डायरेक्शन सेम, 100 plus 100, 200. So this experiment also teaches us that action and reaction take place on 2 different bodies. The action is on the upper magnet, reaction is on the lower magnet. But remember, दोनों में से किसी को भी एक्शन बोल सकते हैं और दूसरे को रिएक्शन बोल सकते हैं. तो 200 क्यों आया? You have seen, even though ये हवा में, it is floating in the air, but we should look at the net forces. You realize the net force in the down direction is 100 plus 100, that is. Make sense? Good, thank you. Mass and weight, yeah. So when I am, so 100 grams is equal to 100 grams, the unit of mass. 100 grams is equal to 1 Newton. So instead of wherever I have written 100 grams, you can call it as 1 Newton. So 1 Newton is a downward force because of gravity on the lower magnet, plus 1 Newton is also magnetic force in the down direction. Therefore, समझने के लिए मैंने बोल दिया 100 ग्राम plus 100 ग्राम. But आपको सबको मालूम है 100 grams is equal to dash Newton. 1 Newton. 200 grams. Many times we can also call this as 100 gram force. 100 gram force का मतलब उतना force जो 100 gram mass exert करता है. And we all know 100 grams is 1 Newton. Right? If two opposite poles face each other, Yes. then also it will. Yes. So if the opposite poles face each other, तब तो है ही, तो दोनों एक साथ हो गए. They're all exerting in the same direction. So then net is 200. All right. The point is that when it is floating, it is getting the magnetic force. But it should happen, the weight is equal to the magnetic. And that is why the downward force actually equal to the weight, and that adds up to give you 200. And moreover,
I should talk about that this experiment is a very important experiment to build up sums. क्योंकि इसमें स्केल लगा सकता है, इसमें ग्राफ पेपर चिपका दीजिए. Then what happens if you place this on the, and if it is in the repulsive mode, then any side you can take, the upper one and upper one. That will be the distance between the middle to middle. So when two magnets at a distance, you can from this you can find out their force or moment. Actually, class 10 में कुछ problems दिखाया. More than that, if I take in the upper direction, what is happening? Force is reducing. That means the magnetic repulsive force is reducing, which depends on distance. You know the magnetic moment divided by r square, r cube actually. But if you say pole strength we don't use now. So it is r cube. And if you push it down, say it is increasing, but it is not touching. So at different distance, what could be the forces you can calculate from this? Because gram weight you can convert it into the kg weight and multiply with g, you get in that Newton. So this can give you various ideas. Actually, for BSc students, I have found out the magneton. Magneton means the electron has a magnetic property. Each electron, there is a unit called magnet. And that is a elementary particle stage, only quantum mechanics, because that is h pi by something, I don't remember now. This can be determined from this simple experiment, from the repulsive force of this. So, if you just remember, this experiment is not complete here. You can go on up to MSc level, but so simple experiment. Continue. Thank you. So, as Sir has rightly pointed, small experiments can go into big depths. One problem we all face is during the Inspire Manik comment says, students ढूंढ के बताओ who will prepare innovative, creative models. Now, creation is the highest level of learning. Only one who has got the highest level of learning would be able to create. But to reach that state of creativity, when you start creating something, you have to first start from the first step, from being good observers, from good analysis, by thinking. Those steps will come first. So we need to promote our children in taking readings, measuring. This is sir kaha, put a graph paper here, measure the distances, measure the force. This kind of skill will have to come first. Creation skills will come at the last. Unfortunately, become creative. How can we become creative without having passed through various stages? If we want to climb that mountain, we'll have to climb from the bottom to reach the top. So this workshop that is happening here, this is just the beginning, it's not the end. If I may explain what we are planning, the plan is that all experiments we really can't do with you here. So the process is, even if we do one or few experiments with you, but we should deal with them deeply so that you start thinking, your thinking skills improve. You have to repeat them in your schools. If some of the tools are not available, we will also help provide you them. But you will do them, you will perform these things, you will also understand, you will make your students understand. We are making a WhatsApp group so that even after these 3 days, we keep sharing some more experiments with you in the video mode. We also want to take a feedback.
when you are performing these experiments or any new experiment when you perform in your school, we want you to make a small video of that and put it back in the group. So this group, we all are planning that every year we should honor teachers who are creative, who are innovative, who are using experiments for doing science. So science, we believe, happens in 4 stages, and I call that DSLR. DSLR camera होता ना पहले, तो DSLR. So D stands for पहले दिखाओ. तो demonstration पहले दिखाओ और फिर सिखाओ. तो हमने अभी आपके साथ क्या क्या 2 स्टेप्स किए. हम पहले दिखा रहे थे, कुछ समझा नहीं रहे, सोचने पे मजबूर किया आपको. Think, and then we also help you understand. फिर सिखाओ. You are teachers, so we are not doing the 3rd step, but this is also required for school children. That is फिर लिखाओ. थोड़ा लिखाओ, because इसने एग्जाम भी दे रहे हैं ना, right? And then R stands for repeat and revise. Repeat by student. I told you when you will be going today, I will keep my instrument here with you. तो आप जाते जाते 1 Newton का force लगाकर जाएंगे. You should get a feel. So I want, as a teacher, that my students, only I have demonstrated, but you should get a feel of that. So repeat by the student. So all the experiments that you do in your class, you have to motivate your students to also perform, because when we do, then only we understand. So we are also planning. आपके पास so अगर 50 बच्चों की क्लास है ना, you will find that 3, 4, 5 students will be very excited. वो करना चाहेंगे. नहीं क्या मैं करूंगा इसको. Identify those 4, 5 people जो पहले interested है. Make a group of them. Make a team. Call them, maybe say science scouts. वो scouts हैं, सीखने वाले हैं, science करना चाहते हैं, demonstration करना चाहते हैं. उनकी मदद लो. Take their help. Take them to lower classes. Take a 9th class student to 6th class. वो वहां पे जाके अपना demonstration दिखाए. एक बार वो demonstration level पे आएगा, we would like to go to measurement level. फिर हम मापना चाहेंगे, readings लेना चाहेंगे. So we are planning to organize a competition for the students and for the teachers. Simple experiments आपको देंगे. Observation जिसमें चाहिए, small measurements चाहिए, readings चाहिए. सिर्फ क्वालिटेटिव बात करने से काम नहीं चलता है. क्वांटिटेटिव. अब दास सर ने हमको मेजर किया, मैं तो क्वालिटी में बात कर रहा था ना, ये प्रेशर बढ़ जाएगा, वो प्रेशर कम हो जाएगा. बट सर एक्चुअली यूज द थर्मोमीटर, रीडिंग्स लिया, मेजर किया. दैट इज इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम क्वालिटेटिव वी नीड टू बिकम क्वांटिटेटिव. तो मेजर करें हम. सिंपल थिंग्स लाइक बच्चों को बोलो कि आपका जो बुक है उसमें 400 पेजेस हैं सपोज, या 200 पेजेस हैं. व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ईच शीट? एक पेज कितना मोटा है? कैसे करना है मत बताओ, सोचने दो. लेट देम थिंक हाउ दे वांट टू डू इट. विल कम अप विद आइडियाज. आस्क देम टू प्रेजेंट. लिख के बताएं, बोलकर बताएं क्या किया, कैसे पता किया. बिकॉज पेपर इतना पतला है कि उसको स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते. So we want to promote children to start thinking, teachers to start thinking. We can give you small experiments like मूंग का दाल है suppose. What is the density of that दाल? एक मूंग के दाल का दाना, राई का दाना. What is the density of that? Density सबको पता होता है, mass per unit volume. वो एक दाने का मास कैसे ढूंढोगे? वॉल्यूम कैसे ढूंढोगे? You can suggest some. So these kind of experiments we would like you also to think and participate in. We can send you a small write up. इसको करने के कुछ steps, हमारे ideas से क्या steps हैं. हम उसके अलावा some steps you do. So this workshop is not the end all.
It is a continuum. आपका और हम लोग का रिश्ता सदियों तक रहना चाहिए. कितने देर तक? सदियों तक. और उसके आगे भी. So then we would like you to become the resource person. You become resource person. How do we identify? आप अपने काम करेंगे, demonstrations करेंगे, you send it in the WhatsApp group. We will be able to identify who are the people who are taking keen interest. Like you will identify who are the students who are taking keen interest. You will get prizes, you will get certificates, you will get recognition. You'll also get opportunities to go and come to Jammu, go to Calcutta, go to the institute, study, spend time there. Organization has got a reach in the entire world. They can send you to Finland, Sweden. So, है ना बढ़िया बात? हाँ, right. Yeah. What? I just we are not going anywhere. आज तो यहीं पे रुकेंगे ना? हाँ, अच्छा continue करें. देखिए, again I am coming to concept. अरे अभी उठाएंगे देखो. अभी उठाऊंगा. अरे हेलो थोड़ा सा होना चाहिए. I have placed 2 tissue papers on this with the help of a garden, and I have this stone. I have measured it. It is 500 grams. Now, what I shall do? I have a pen in my pocket. I place this like this, and then I shall place the stone on it. Then I shall place the stone on it, and let us see what happens. I shall release the stone, but slightly hold it, otherwise it will fall. The tissue has gone down, but nothing happened. Now, the garter has opened. Anyway, I can put the garter back. I put the garter back and take the pen. Now I shall put the pen this way and put the same stone. And what will happen, you have an idea, isn't it? But let us do it. Without doing it, I should not make any conclusion. Obviously, why that is happened? The weight is same. It is 500 grams. Previously, let us consider this area is 1 centimeter square. Then how much is the pressure? Force divided by area. So let us consider this is 500 gram weight is the force in gram, or we can convert it into Newton, no need. Gram weight is okay. So gram weight divided by 1 centimeter square is 500 grams. But let us consider this is 1 millimeter square, though it is smaller than that. But for simplicity, 1 millimeter square. And that is equal to 0.01 centimeter square. So if we divide 500 divided by 0.01, it will be 100 times more. That means 500, 5,000, 50,000. 50,000, or I can make it, in kg, doesn't matter. 500 into 10,
is 5,000 into 10 is 50,000. So 50,000 gram weight per square centimeter. Remember that. At this point, we have confusion. Why confusion? We are making the force divided by area. Now I say, then what is the force? Then you will say into area. Which area? Is it 1 millimeter square or 1 centimeter square? There lies the confusion. You understand? I want to know what is the force applied here so that it is so easily tell idea. What is the force? Is it 50,000 gram weight per centimeter square? This is the pressure. Then if you want to have the force on it, then you will try to multiply it by the area. So is it 1 centimeter square or 1 millimeter square? This is funny. I am making a fun of this because these are the confusions we have. When we solve certain problem, we get confused. Actually, we are stating the correct statement. It is 50,000 gram weight per centimeter square. That means per centimeter square, the force is 50,000 kg weight, not on 1 millimeter square. So that is why ladies are having high heels with a very sharp edge. If she stands on anybody's feet, the feet will be penetrated. Simply, whatever her weight, maybe 40 kg. But it will produce a tremendous force. Otherwise, you have seen the sadhus, they used to place lots of nails and they lie on that. What happens? So many nails are there, the entire weight is distributed on each of the nails, so it will not penetrate. If it is one nail, it will go through. So there are many things. So this is the introduction to pressure. Now I take a balloon. Balloon we all love. Or something else is happening. But remember, force has a direction. What is your idea? Are they equal or unequal? Equal. Okay. If I release this balloon, why the air comes out? The force within must have stretched the balloon. In which direction? In the direction of the membrane. Isn't it? Inside force, the pressure, force due to the pressure has stretched the balloon in a bigger size. So, when we release it, then this membrane will try to contract or try to come back to their original position. Reaction, action, reaction. So, if we consider everywhere a unit area, then force is acting in this direction. Force is acting in this direction. Here the force is acting in this direction. That means everywhere in a perpendicular direction. If you have a screw, to tight it. Say this is a screw. Will you tight it in this direction or in this direction? Why in this direction? Because that is the most effective way of inserting a screw in this direction. When you nail a wood, place the nail perpendicularly and put the hammer. That is always you trying to make it perpendicular. I mean, perpendicular is something to do with the area. Area is actually, there is a direction of the area perpendicular to this surface. So everywhere
the forces are acting perpendicular, and since it is not moving, they are uniformly distributed and equilibrium. That means, are they equal? Are they equal? Yes. Per unit area means whatever is the pressure value, per unit area is the pressure, therefore forces must be, magnitude must be equal. Are their direction equal? No. No. Therefore the forces are unequal. And if I release the balloon will move in this direction. Okay. Then where the force is acting to take this balloon in this direction? Is it at a point or somewhere else where it is acting? Sir? नींद आ जाता है, खाने के बाद नींद आता ही है। ओ क्वाइट कॉमन है, मुझे भी आता है। तो देखिए इसका छोड़ देंगे तो ये क्यों इधर जाता है? कोई फोर्स तो इधर से देना चाहिए, नहीं तो हाउ इट विल गो इन दैट डायरेक्शन? Any answer? Why the force is acting? Why the balloon is moving in this direction? हाँ? अनबैलेंस होगा, किंतु कहाँ पर फोर्स है? आपको तो देखा है, आपने बोलिए ना, आप तो देखा, आपको ही बोला लेंगे फिर। That time you have done what I am supposed to do. So I am not calling them. See, I put my finger here. Where the forces are acting? At the back point. Since I have resisted that point, the balloon could not go anywhere. It's just stick there. Whether you hold it like this, or like this, or like this, or like this, or on the forehead, or on the head, it will remain there. Because at the back of the balloon, the force is why? You have released the force from the mouth. So this force has gone. So this force is now unbalanced force. And unbalanced force always creates a motion in that direction. But if you resist it according to third law, it will remain there if the forces are equal. So this is a very important experiment to show that pressure and forces are not equal. Here everywhere pressure is same, but the forces are unequal. I shall make other experiment also so that you understand the why we should talk about the force due to pressure. Our term should be force due to pressure. Pressure को direction नहीं है. The magnitude of a force, but it will not give you the direction. And that is why atmospheric pressure is everywhere same. For a small distance, whatever is the pressure here, same is the pressure here, but force cannot be like that. Force always changes as we change your place if it is a single force. Even this way, if I throw in this direction, the impact here will be different. Anyway, so this is one beautiful experiment which says about the pressure. Very small experiments we can do, and I take a small piece of paper, very small piece of paper, for class 2-3. तो बच्चे लोग बहुत छोटा जब होता है, बहुत क्यूरियोसिटी होता है, तो मैंने इसका एक पीस कट लिया, पीस काट लिया, और इसमें एक छेद है, छेद के ऊपर इसका लगा दिया, like this I put it here. I take some water. Now I place it here. Actually, it is bent. Make it straight. Paper, don't you have water? No. Make it straight.
So much. I hope the experiment will start. It has some, but it has sticks somewhere. Again, I can do it. At least you can. Yeah. But if you do at your home, it is a bigger. I mean, somehow the paper will just go away. That means the air inside giving a pressure. And also, if you take, say, some money. Nowadays, all money is useless. Cannot buy anything. 100 rupees is nothing. I put it here. मैंने नोट तो किया ये पानी का अंदर गया पूरा पानी का अंदर चला गया गीला तो नहीं हुआ गीला कहाँ हुआ हैंड गीला है लेकिन दिस इज ओके भाई when the glass touches the water, it has a volume. As I go down, the volume is compressed, so the air is also pressing the water down, so it cannot reach the bottom. So my note is I could have started 500. हाँ तो अभी रिएक्शन टाइम देखेंगे आपका कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं हमारे पास एक स्केल है एंड मैं इसको इफ आई ड्रॉप इट विल फॉल तो आपको क्या करना है व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू होल्ड कैच करेंगे यहाँ पे रखें हाथ यहाँ पे जीरो पे इधर पकड़ना जीरो रखो खोल के रखो राइट जैसे मैं छोड़ूंगा आपने कैच तो इन्होंने कहाँ पे कैच किया दिस इज 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर में कैच किया सोया नहीं है तो लेट्स चेक मैम इनको रिएक्शन आया 20 सेंटीमीटर के बाद थोड़ा नीम है लेकिन I can teach them I can teach them one throw let it yeah so that they can hold it immediately because Star is giving you a mantra so that you can hold it immediately so तो इन्होंने पकड़ा इसको 30 सेंटीमीटर मैं इसका मंत्र दे दिया तो मेरे को कैलकुलेशन करके बताओ कि कितना सेकंड लगा इनको पकड़ने हम टेक आउट पीस ऑफ पेपर पैड मिला किसके लिए है एबीसी लिखना है क्या टेक आउट योर पैड रिएक्शन टाइम 30 सेंटीमीटर के बाद इन्होंने पकड़ा आपका नाम है सज्जाद तो सज्जाद रिएक्शन हेडिंग बनाओ सज्जाद रिएक्शन टाइम Sajjad's reaction time distance of fall is 30 centimeters. Who has pulled it down? Gravity. Take G as 10 meter per second square. Use equations of motion use करेंगे ना
S is equal to UT plus half AT square. तो यूज करेंगे ना? आपको S मालूम, U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका? Okay. Find out कितना टाइम लगा इनको पकड़ने में. Time is 10 seconds. All right. Calculation करो. 10 is acceleration. Take 3 as 10. Half of you have to find that thing. Reaction time, everything, how much time does it take for the charge to react? Yeah, that is 30 seconds. तो हम आज दिन में तार भी दिखाएंगे. आंसर है ना, ये the answer. 2.5 seconds. हाँ. आपका 2.45 sir. okay, it's okay. 2.5 seconds. Okay. देखिए यूनिट का सामान लेंगे 2.45. राइट. आपको लगता है क्या आपकी कैलकुलेशन we should not have too much of faith on mathematics until or unless it agrees with reality. क्या आपको लगा? सज्जाद, please come here. Look at this handsome man, Sajjad. He wants to go to Paris. Yeah. अब आप देखो, क्या सज्जाद सचमुच में 2.5 सेकंड लगाता है क्या? 2.5 सेकंड हुआ था क्या? तो आपकी कैलकुलेशन तो गलत है. आंसर तो मैच, रियलिटी और आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है? आंसर मैच तुक्का नहीं मारे, कैलकुलेशन किए, तुक्का नहीं मारे. One mistake we have made, which your students will also make, and that is, thank you Siddharth, that is आपने x को 32 सेंटीमीटर लिया, t को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया. गलती पता है कहाँ हुआ? मिनट्स में. You have to convert everything into the same units. ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं इनको बोलूं अपनी ये सोने की बाली मुझे 10 ग्राम की दे दो, मैं तुम्हें 1 किलो लोहा दूंगा. मानेंगे? यूनिट सेम नहीं है. बोले 10 ग्राम सोना के बदले 1 किलो सोना दो, फिर तो ठीक है. तो मीटर को सेंटीमीटर में करो या सेंटीमीटर को मीटर में, तो इसको कर दो आप 0.3 meter. So through this activity, I am trying to teach you where we make a mistake. Students will also make these mistakes. So this is now 0.3. U is 0. Half into 10 into t square. I can write 0.3 as 3 by 10. This is 5. So t square is 3 by 50. है ना? Cross multiply किया? 3 by 50. That is t square. अब निकालो कैलकुलेटर. 3 by 50 का अंडर रूट लो. Take out the है क्या? निकालो. तो 3 को 50 से डिवाइड करो और रूट ले लो. 3 divided by 50 is 0.06, and I want to take the square root of this. It is 0.03. So time is coming out to be 0.24 seconds. 24. तो आपका आंसर 10 गुना ज्यादा आया था. 10 times more. 10 times more is not an acceptable answer. all of you do individually, don't suggest anybody. पता चला? मालूम चला? The units are very
यहाँ पर तारे देखने हैं क्या? तारे दिखते हैं दिन में तारे? दो रास्ते हैं, एक तो फोर्स लगा के दिखते हैं, वो वाले नहीं, असली वाले तारे जमीन पर, राइट? एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को देखो, यही है तारे, बहुत सारे। Look at a beautiful experiment coming, beautiful. यहाँ पर एक छोटा सा प्लास्टिक की डब्बी है, सबको मिल सकता है, घर में होता है, और यहाँ पे एक डबल टेप लगाया है, डबल टेप दोनों तरफ से चिपकता है, और जो छोटा छोटा रिंग मैग्नेट लिया है, ये मैग्नेट है, कैसे मालूम कि चिपक जाता है, राइट? अब हम क्या करते हैं, इसको एक मैग्नेट को इसमें नीचे रखते हैं, नीचे रखा है, और ऊपर से इसको ढक्कन को बंद कर दें। ये नीचे वाला मैग्नेट नीचे है, ऊपर वाला मैग्नेट ऊपर है। ये अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है ना? वो तो घूम पलट जाना चाहिए इसको। दे आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर, डिस्टेंस इज मोर। बट क्या फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है क्या? है, बट उतना नहीं है कि वो नीचे वाले मैग्नेट को एक ग्रेविटी खींच रहा है नीचे। The force of gravity is more than the magnetic force. Therefore, it is not climbing up. लेकिन इमेजिन करो कि आप एक लिफ्ट में हैं, आप ऊपर मंजिल से you're coming down in a lift, और ऊपर से उसका तार टूट जाए, अब झूम से आएगा नीचे, आएगा सुम से आएगा, तो आपका वेट क्या आएगा? उसमें वेट क्या होता है हमारा? फ्री फॉल। When a body is in free fall, it experiences weightlessness, right? तभी तो होता है। वो गोल वाले झूले में गए हैं आप, बड़े वाले झूले में गए हैं, चढ़े हैं, तो ऊपर से नीचे आते हैं, डर लगता है, और जो नीचे से ऊपर जाता है बोलते हैं और तेज, और तेज, और तेज, ऊपर से नीचे आते हैं बोलते हैं। When we're coming down, we feel light. We feel as if our stomach, our heart will come out. मेरा दिल बाहर आ जाएगा, पाके रखने दिल। So that is, this experiment is going to teach us very beautiful thing. इसको मैं फ्री फॉल करूंगा, एकदम बिल्कुल शांति मांगता है, सुनना है, आवाज सुनना है, ओके? When I drop it, आपको एक आवाज सुनाई देगी। तो ये थोड़ा नीचे आ गया, तो मैं इसको, तो हुआ क्या, देखो ये मैग्नेट कहां गया है, तो चिपक गया, एक टक सा आवाज आया था, शायद यहाँ तक नहीं आया होगा आपको। बट when it was in free fall, तो जो नीचे वाला मैग्नेट था उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगना बंद हो गया, राइट? लेकिन अभी भी मैग्नेटिक फोर्स तो है। अब वो मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल दिस मैग्नेट, है ना? यहाँ तक में टक का आवाज आ गया, ऊपर चला गया, आ गया टक आया। तो अब हम लिफ्ट में तो आपको ले जा नहीं सकते, और उसके बाद लिफ्ट में ले गए तो ऊपर जाके काट नहीं सकते। यहाँ पे किया हमने, राइट? तो वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, बट वो सब बात वो जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, खाते हैं, वो हम बिना डेंजर के भी सिखा सकते, राइट? वी नीड टू, बढ़िया। ये जो ताली है ये कुछ खतरनाक लग रही है। अभी तो 5 मिनट, 7 मिनट, तो जाते जाते आपको हम तारे दिखाएंगे, राइट? तो कर्टन्स बंद करें, कर्टन्स बंद करें। लाइट्स बंद करो, मूवी स्टार्ट होने वाला है, पिक्चर, टिकट ले लिया सबने, तो इसमें मेरा मोबाइल फोन इस्तेमाल होगा, सबके पास है। मैं इसका टॉर्च ऑन करूंगा, ओके? और अब मैं
हाँ, तो अभी आप बोलेंगे इतना तो अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पेपर लूंगा, यहाँ पर पेपर पे सर फोकस कर देंगे। या तो आपको क्या दिख रहा है? हाँ, चलिए बताइए, ऑब्जर्वेशंस बताइए, क्या क्या दिख रहा है आपको? ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ये अच्छा हाँ, तो एक नक्शा दिख रहा है, बीच में पानी है ना। अब मैं तारे बनाता हूं, थोड़ा सा मैंने क्या किया, चीनी ले लिया, उतना है आपको, राइट। तो यू विल बी एबल टू, आप ऊपर से ले सकते हैं इसको, यहाँ से ये इतना ब्राइट क्यों है? डार्कनेस कर सकते हैं, ऐसे आंख से तो अच्छा दिख रहा है। अच्छा चलिए, आप जानना चाहते हैं तो आप थोड़े थोड़े करके आइए, और थोड़ा आगे थोड़ा लोग करके आए, दिखता है पहले ये और वो आ जाएंगे। हाँ, तो right। फिर आप दिख रहा है। ये पानी है, और पानी का बाउंड्री है, उसमें वो आपको शुगर है जी सर, बीच बीच में शुगर के वो तारे बन गए, जी क्रिस्टल्स। तो वो क्रिस्टल्स जो हैं, वो मैं उसमें और शुगर भी ऐड कर सकता हूँ, नए नए तारे बना सकता हूँ। कॉन्स्टेलेशन बन गया सर। कॉन्स्टेलेशन बन गया, कॉन्स्टेलेशन। तो ये बताए कि ये जहाँ पे वो स्टार्स है, वहां पर क्या है असली में? शुगर डाला है ना मैंने, शुगर, तो वो वहां पे ब्राइटनेस क्यों आ गया है वहां पर? ब्राइटनेस बढ़ गया ना। तो ये तो आप घर पे कर सकते हैं, आज कर सकते हैं ना, राइट। तो आपने ये करना है, शीशा चाहिए आपको, होगा प्लेन ग्लास, थोड़ा सा पानी डाला, चीनी घर में है, कागज है, तो ये करिए, और इसका एक फोटो खींचिए और ग्रुप में डालिए। ग्रुप में आ गए आप, तो आप देखते हैं आज कितने लोग ये करते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और तारों को देखो कैसे कैसे चेंज होंगे, उनका ब्राइटनेस क्यों है, थिंक, और अपने अपने आंसर अपने ग्रुप में लिखो, है ना। होमवर्क फॉर टुडे, है ना, ठीक है, कर सकते हैं। ओके, बैठ जाइए, बाकियों को आने दें। आप सबको जाना है क्या अभी, है ना? ठीक है, आप लोग होमवर्क पता चल गया। कैमरे में उसमें अच्छा नहीं आ रहा, जितना अच्छा ऐसे इसलिए इसमें चलिए आइए यहाँ पर, अब फोटो ले लो, इसका फोटो भी ले सकते हैं, आप ग्रुप में डाल दोनों फोटो। ये क्रिस्टल्स, आपको ये एक फोटो एक आदमी ले लेगा, सर लेंगे और डाल देंगे, ग्रुप में डाल दो। ले लिया। तो ये आपको होमवर्क है, आपको क्या चाहिए, एक शीशा चाहिए। हाँ, एक मिनट समझो, होमवर्क देने लगा। होमवर्क, स्टूडेंट्स प्लीज सिट डाउन, होमवर्क फॉर द डे, 1 मिनट ओनली, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। तो आपको क्या करना है, ऐसा हाँ, मैं भी दिखा दूं, फोटो डाल रहे हैं, अभी दिखा भी देता हूँ आपको। ऐसा एक ग्लास शीट लेना है, कोई भी प्लास्टिक भी ले सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालिए, नीचे अपना टॉर्च का लैंप को ऑन करिए, ऊपर में थोड़ा सा चीनी का दाना डाल दीजिए, थोड़ा सा दाना डाल दीजिए। उसके बाद ऊपर में ऐसा पेपर रखो, अगर अंधेरा है तो छत पे आएगा अच्छा से, नहीं तो ऐसा पेपर रखो। पेपर पे रखने के बाद आप उसका दूसरे कैमरा के साथ फोटो ले लो। फोटो लेकर उसको आप अपने जो ग्रुप बनाया आज, उसमें फोटो डालो, और फोटो डालने के बाद क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने, What 5 things do you observe? 5 चीजें क्या नजर आ रही हैं आपको इसके अंदर,
वो 5 चीजें आप लिखें, ठीक है? जो होमवर्क है, राइट? कैसा दिखेगा? तो कुछ लोग अभी फोटो डाल ही रहे हैं, फिर से देखना चाहते हैं, देख के जाना चाहते हैं तो आप देख के जाइए, बाकी हमको ग्रुप में फोटो हाँ लेडीज ठीक हम भी देखे सर वो क्रिस्टल्स हैं, वो स्टार क्यों हैं वो आपने बताना, अगर ध्यान से जब स्टडी करेंगे वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, आप ही कुछ डाली ग्रुप में डालूंगे व्हाट ऑल डू यू ऑब्जर्व, है ना? हाँ वो 1 न्यूटन करके जाओ। फोटो यहीं पे लेंगे या अपने घर पे, हमको तो पता चलेगा। नीचे डॉट लगा पड़ोसी का होगा ना, पड़ोसी का होगा ना। ग्रुप में डाल दो। ऑलराइट, ये 1 न्यूटन फील करके जाए, 100 ग्राम आना चाहिए। क्रिस्टल्स है, बहुत मुश्किल है। डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस करना। इंस्टेड ऑफ स्केल को नहीं देखते हाथ उसमें जल्दी होगा। দাদা ওই মন্ত্রটা কি ছিল? और जो बोल दिया কি বলছিস? स्केल का ना देखे हाथ का देखे, কি हाथ का কখন ছাড়ছে মানে না না নো থিওরি चलो